Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the quarantine series. A very important conversation. Aligned living. Alignment लफ्ज हम जानते सारे हैं. बाइक चलाने वाले भी, गाड़ी चलाने वाले भी, इदारा चलाने वाले और यकीनन अच्छी जिंदगी चलाने वाले. अलाइनमेंट लफ्ज की बहुत बात करेंगे. अलाइनमेंट अपनी जिंदगी में कैसे लाई जाए. आपकी सोच, आपके अमल, आपकी रिलेशनशिप्स, जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, जो आपकी रूह कहती है, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपके जज्बात कहते हैं और जो आप वायर्ड हैं जिन चीज़ों को करने के लिए, इन तमाम में हार्मनी पैदा करना, अपनी ज़िंदगी को एक हार्मनी में लाने को अलाइंड लिविंग सिद्रा ने मुझे समझाया है और हम सिद्रा इकबाल से मजीद इसके बारे में बात करेंगे. डू लेट अस नो. सिद्रा को भी 1-2 मिनट है ज्वाइन करने में. मीनवाइल आप हमें बताएं कि आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं और क्या करते हैं. What do you do and where are you joining us from? In the comments please. क्वारंटीन सीरीज में हम इनकरेज करते हैं कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसे भी सुने नहीं बल्कि एक्शन में आए, हाथ इस्तेमाल करें, उंगलियां इस्तेमाल करें. जब आप सुनने के साथ साथ लिखते भी हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप अपनी लर्निंग दूसरों की लर्निंग में इजाफा करते हैं. सो डू लेट अस नो वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट डू यू डू. आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं. सिद्रा इकबाल विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली. सिद्रा इकबाल जो है वो एक बहुत पॉपुलर, बहुत ऑथेंटिक नाम है पाकिस्तान मीडिया में. शी इज a celebrated broadcast journalist, media communication expert and policy influencer from Pakistan. ये बड़े इंटरेस्टिंग सिद्रा की डायमेंशंस हैं of her career, of her talent and the person she is. She's one of the most powerful youth icons who champions causes of substance and highlights the real issues through her media work. She presently hosts a signature daily news morning show, आज पाकिस्तान with Sidra Iqbal. आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में कई 700 hours of live television clocked in. Sidra Iqbal has interviewed heads of states and visiting foreign dignitaries, moderated policy debates, hosted and produced TV shows and marathons, transmissions, special national, international events. खास मौकों पर पीटीवी में आपको सिद्रा इकबाल नजर आएंगी. So she's been part of really important occasions full of dignitaries and has interviewed many of them. These include 7 annual federal budgets of Pakistan, 3 national elections, special incident coverage such as national disasters, terrorist attacks, their relief, rescue operations, and political rallies and protests. She's the first Pakistani to be presented the GR8 Women Award for Journalism 2014 by the government of UAE. She's the first Pakistani to be invited to the esteemed International Leadership Program, a fellowship initiative of the Foreign and Commonwealth Office, Government of UK, that seeks to connect future leaders from emerging powers. सिद्रा की प्रोफाइल बहुत एक्सटेंसिव है, काम बहुत एक्सटेंसिव है और बहुत इलोक्वेंट स्पीकर है. आई हैव सीन सिद्रा फ्रॉम वेरी वेरी यंग एज. जब हम शुरू कर रहे थे सिद्रा डिबेट करते हुए नजर आती थी और बहुत खूबसूरत डिबेट करती थी. बहुत सारे नौजवानों को उस वक्त तैयार करती थी. इसी को उन्होंने अपने करियर में कन्वर्ट किया है और पावरफुल करियर में. Some broadcast journalism है, policy dialogue है. So wonderful it is how far she has come, and she's definitely one of the most celebrated youth icons in the country. So Sidra will be with us in a minute or so. Meanwhile, मैंने आपसे पूछा था आप हमें कहाँ से join कर रहे हैं. Wonderful. Good to know that Abdullah is joining us from Jeddah. Thank you, Abdullah. We have Tayyab from Abu Dhabi. Thank you very much. We have Mubashir Shaukat from UK. You're the surgeon in NHS. Please take care of yourself. All those who are working who are healthcare professionals, जो कि frontline पे हैं, take care of yourself. From Sheikhupura doing MBA. Wonderful. We had a great SOL session. Yes, always be creative and use unique wording to get more interaction because people are so busy. Yeah, people are busy, Usman. I also believe that things that need time, should be given time. Um, there are a lot of conversations that this country needs to do. हम अभी assembly से नहीं बदल सकते. हमें वो गुफ्तगू करने की जरूरत है. That's what I believe in. Thank you, Zoya. I'm looking forward to this one as well. Sidra is going to be with us in a bit. Thank you, Aisha, for joining. Thank you, Adil. Why so many hashtags to increase the reach? आदिल आपका बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का. फवाद खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको इस बात का जवाब बता सकते हैं. लेकिन मैं फवाद को एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि फवाद मेरे साथ
गेस्ट लाइन अप करने में और इसको अनाउंस करने में मैं बहुत माठा हूँ ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स के हवाले से। सो ये हेल्प्स, तो हम आपस में कुछ चीजें देख पाते हैं, कुछ चीजें मैं नहीं देख पाता, बट दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज. We are fixing that. Thank you, Elise. I'm very excited to शाजिया फयाज जानना चाहती हूँ। वैसे ऐसी चीज़ें शाजिया प्रोफाइल से मिल जाती हैं, अगर आप लोगों की प्रोफाइल देखें तो उनका एजुकेशनल ट्रैक मिल जाता है। बट वी डेफिनेटली आस्क दिस सिंस यू हैव आस्क्ड. Thank you, Sajjad, for joining. Thank you, Yasir, for joining. Thank you, Shoaib Haroon. Sidra is going to be with us shortly. Aligned living is what we are talking about today. Aligned living यानी आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में, आपके दिल में, जज्बात में, आपके एक्शंस में हार्मनी आना, उनका आपस में जुड़ा हुआ होना। आप जो कहते हैं आप वो करते हैं, जो आप करते हैं वो आप कहते हैं। जैसी बातें आप सोचते हैं, जिन उसूलों के बारे में बड़ी बड़ी कैंपेन्स करते हैं, मेरी तरह जाके मजमुओं को मुतासर करते हैं, उस पर अगर अमल नहीं है, अनअलाइन जिंदगी है, तो वो खतरनाक हो सकती है. We are waiting for Sidra to join us. Inshallah, she should be with us shortly. And meanwhile, I'd like. Thank you for your patience. Aligned living is what we're going to be talking about with Sidra Iqbal. Sidra का मैंने आपको तारुफ कराया, बहुत ही she's a brilliant, young, successful woman, and she has been at the forefront, broadcast journalism, policy dialogues, representing us, interviewing the best of the best. Let's welcome Sidra Iqbal. Thank you, Sidra. I'd read your profile already. Man, I can't hear you. Can you hear me? You can't hear me? Hello. Sidra, can you hear me fine? Hear me now. Okay, wonderful. Thank you, Sidra, for joining us. Pleasure is all mine. I'm so sorry for being a little late. I was actually working out, तो उसके बाद थोड़ा सा late. नहीं, no problem. बहुत शुक्रिया वक्त देने का. How has been the quarantine time for you? Well, actually, the quarantine for me has just begun, Umair, because I'd been in the trenches throughout. March से लेके अभी तक my show was live every day. So as limited as it might be, I was still getting to go out every morning and do my show and come back. Ramzan was the same, but now with the things going very crazy, we've decided, and I just posted yesterday that I've created a little studio at home and now doing the live show from. So it's just been 3 days, but my heart goes out to people who've been in it for the last 2.5, 3 months. Life has changed. I think we're not meeting friends. वो वाला element तो है ही अपनी जगह पे. आप बताओ, how are you feeling and how are things with you? Best, I crashed initially, but then this series has helped me get up, talking to such wonderful people. And once you're in the idea mode, then a lot of things start opening up, a lot of windows. I feel the same. I've been putting off the digital content bit for a very long while. और हम सब perfectionists होते हैं, तो मुझे था कि कैमरा ऐसा हो, लाइट ऐसा हो, कोई डायरेक्टर मिले, फलाना ढिमाका. And I think initially it was also my coping mechanism. So I would do my live show and I would come back and I was doing lockdown talkies with friends. Then anxiety and stress was a major thing. So I spoke to a lot of friends who were life coaches and counselors like yourself. And we were trying to get as much information, as many coping techniques as possible out to people. So I guess that has kept us all busy. Yeah.
Yeah, but seems like things have come together for your studio. Good luck with that. I do believe Pakistanis are a little, we need to get rid of what we have to put a lot out, and I think it's not as bad as we think as it is. Thank you very much for joining in, all of you. Aligned living is what we're talking about. आप अपने सवालात comments में पूछ सकते हैं और साथ हमें towards the end live भी join कर सकेंगे. So let's dive into it right away. What do we mean by aligned living? See, we often talk about mind, body, and soul. Now we realize that 80% of our thoughts that actually govern our life are subconscious. In the earlier stages of our life, जब हम 7 साल की उम्र तक होते हैं, we are sort of in the stage of hypnosis. यानी हम कहते हैं ना, बच्चा आपको फौरन कोई चीज पिकअप कर लेता है. उसने देखो, he is trying to learn, he or she is trying to learn so many things at the same time. उसने बोलना सीखना है, उसने चलना सीखना है, उसने बैठना सीखना है, and he is trying to absorb the environment. So what nature has helped him or her do at that point in time is कि आपकी memory, आप एक clean slate की तरह होते हैं. Your brain is working and operating in theta waves, and you are then absorbing all this information that that makes a template of your being, and therefore these are the thoughts that govern your subconscious thoughts. अब आप और मैं बात करते हैं कि यार हम motivated अगर हों, and if I have the will to do something, if I have a great idea, the determination, we are not even cognizant of the fact, Umair, कि हम अपने आप को खुद sabotage कर रहे होते हैं अपनी subconscious thoughts से. So aligned living is all about going there, trying to look for that corrupt program जो आपने thoughts और images अपने 6 साल की उम्र में बनाए थे. You are 30 right now, and suddenly you are being governed. यानी आप अपने घर का control एक 6 साल के बच्चे को नहीं देंगे. लेकिन it is so true कि आज भी 30, 32, 35 साल की उम्र के लोग, they're operating from that same program, the same thought pattern, the subconscious thinking that they formulated at the age of 6. So in my opinion, and the work that I've been doing, the make or break factor is how aligned your subconscious thoughts are with your conscious thoughts. And over the course of this conversation, I'll give you an example. यही वजह है कि हम अपनी habits को, behaviors को जब बदलना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते के लिए बदलते हैं, 2 हफ्ते के लिए बदलते हैं, but we fall back in the pattern. That's because of our subconscious. वो हमारी ओरिजिनल वायरिंग है, बचपन से हमने सीखी भी है और वही हमें सैबोटाज भी करती रहती है. Wonderfully put. You're so good with your words and how you just make your point. Help us visualize what unaligned living looks like. Well, unaligned living looks like living patterns. Look at people who, for example, get into a series of job hopping experiences या relationships. उनका एक relationship fall apart करता है. They think they're doing all the right things. They'll go, they'll get a whole makeover, weight lose करेंगे, gym hit करेंगे, वापस आते हैं साल भर बाद, they meet another person, and somehow they run into the same kind of problems. या for example, आप काम करते हैं, आप एक जॉब से निकले, आपको एक ही तरह के मसाले थे कि यार मुझे कोई समझता नहीं है, my boss does not understand me, I have brilliant ideas, but मैं ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता हूँ. जब आप कभी भी अपने आप को एक पैटर्न में फंसा हुआ पाएं, जब आप एक ही तरह की मिस्टेक, एक ही तरह की सिचुएशंस में बार बार जा रहे हैं, there is basically the universe giving you feedback कि you're unaligned right now. आप consciously कितना भी सोचें, motivational talks attend करें, किताबें पढ़ें, लेकिन something deep inside you is keeping you from achieving your true potential. So the work that we do is, and it is very much possible, by the way, to change your subconscious beliefs. It takes a little bit more of time, लेकिन आप सबसे पहले recognize करते हैं कि issue कहाँ पे है, and you can resolve it. So to answer your question, unaligned living is when you're running into the same kind of problems, when you're feeling fatigued and exhausted, when you feel emotionally drained, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन आप में energy नहीं है, आप में motivation नहीं है, you don't feel alive. Those are all examples of unaligned living. Wonderful. So we would just like to make it simpler for my own self कि अगर unaligned wheels है गाड़ी के, तो गाड़ी तो चल रही है, move तो कर रही है, लेकिन घसीट भी रही है. It's a drag. It's not good on the engine. It's not good on the tires. Same is the case of an unaligned person, that they are moving, they're pushing through life, but they're not feeling the joy. They're never in that moment. Experience of it. समझो कि गाड़ी बड़ी तेज भी चल रही है, unaligned चल रही है, तुम इतने expert driver हो that you're still keeping the course or course correct कर लेते हो. The whole experience is bad. यानी खिच 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 टक 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 की गाड़ी में drive करते हुए आवाज आ रही है. And you're like, I'm not happy, but
chalo, let's just go and do it. That's Yeah, true that, and it's miserable. It's miserable when that's the case. Unaligned living is not pleasurable living. Thank you. Lots of love for you, Sidra, from the people who are joining in. You can ask your questions here. Um, in the comments, and we'll also take some of you live towards the end. So I understand it's unaligned living क्या है aligned living आपने बताया और emphasize करना चाहेंगी कि क्यों जरूरी है और more so आज के वक्त में जब हम कोरोना से भी let's say we are in between that and we have realized a lot. Why is it so important? because ये देखो, इस तरह से आपने वो सेइंग देखी होगी उमैर, कई जगह कई लोगों ने इसको शेयर किया कि व्हेन यू कांट गो आउटसाइड ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, it's time to go inside. I feel for people who were not aligned, basically, मुझे ऐसा लगता है, my perspective on the whole COVID-19 and the lockdowns and the quarantine is, universe is basically taking away our distractions. यानी हमने अपनी अनअलाइंड लिविंग के साथ समझौता कर लिया था. हमें लगता था कि यार कोई बात नहीं, ऐसी जिंदगी होती है. एंड वी हैड सो मेनी मिथ्स सराउंडिंग इट. मिसाल के तौर पे हम पैसे के बारे में, हम में से हर एक को पैसा चाहिए, लेकिन हम पैसे को बुरा भी कहते हैं. तो ये हमारी मुनाफिकत है. यानी इन अदर वर्ड्स हम कहें कि यार पैसा तो ईवल होता है. किसी अमीर आदमी को देखते हैं, हम कहते हैं ये 2 नंबर पैसे काम करके इसने पैसे कमाए होंगे. सो वी आर ऑलवेज फुल ऑफ डाउट्स. इन अदर वर्ड्स, जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी को पुश अवे भी कर रहे हैं. आपने और मैंने बचपन में हर दफा, हम सबके पेरेंट्स ने हमें कहा है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तुम सोने या चांदी का चमचा लेके मुंह में पैदा नहीं हुए हो. सो वी हैव दिस लव एंड हेट रिलेशनशिप विद मनी. Likewise, for all the other things that you want to achieve, हमें कहा जाता है no gain without pain. यानी कुछ भी अगर जिंदगी में हासिल करना है तो अपने आप की जान मारनी पड़ेगी. You have to be miserable. तो आप एक ट्रक की बत्ती के पीछे सारों को लगा देते हैं कि आपने चलते चले जाए, अभी बड़ी मुश्किल है, मैट्रिक कर ले, मैट्रिक के बाद इंटर कर ले, इंटर के बाद बैचलर्स कर ले, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे. आप मौत के करीब पहुंच जाते हैं, वो हैप्पी मोमेंट नहीं आता. इसी तरह और मिथ्स की बात की जाए लव के बारे में, लव हैज टू हर्ट. ख़वातीन को, लड़कियों को, लड़कों को, सबको बताया जाता है रिलेशनशिप्स में आपको कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है. All of these are examples of unaligned living. You are supposed to be blissful. आप बताएं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है. Why would Allah want us to be miserable? Yes, there may be tests and आजमाइशें and plans that don't go our way, लेकिन what He gives us is this power to be patient. आप में सब्र और तहम्मुल है. You cannot change. Unaligned living के बारे में conscious होना इसलिए important है because look at you. We have zero control over our external environment. The only thing we can have complete control over is the meaning we derive from it and our own internal space के हमारा experience कैसा है. इसकी एक और मिसाल देखें. I often give this analogy कि एक शख्स था, he was a drunkard, he was an alcoholic, and he had 2 sons. One of the sons went on to become, a great entrepreneur, and he was doing great for himself, never touched alcohol in his life. On the other hand, जो दूसरा भाई था, वो बेचारा सारी तरह की प्रॉब्लम्स में पड़ गया. वो परेशान भी रहता था, वो खुद अल्कोहलिक बन गया, he was bankrupt. और दोनों से जब सवाल किया गया कि why are you people the way you are, तुम इस मकाम पे कैसे पहुंचे हो, तो the interesting thing was both of them replied, it's because of my father. तो जो कामयाब बना उसने कहा कि because I had this guy who I thought कि I don't want to be anything like him, so he worked super hard and he became all that he is. जो इस बेटे ने उसी का रास्ता चुना, उसने कहा कि how could I be any different, मैंने देखा ये था. So in other words, you decide your destiny. External environments एक जैसे हो सकते हैं. The nature versus nurture debate, आप और मैं दोनों पाकिस्तान में हैं, हमसे कहीं ज्यादा कामयाब लोग होंगे इसी एनवायरनमेंट में, जो बार बार नहीं कहते पीले स्कूल से पढ़े हुए हैं, पब्लिक स्कूल से, nothing wrong with that, but your will was so different from your rest of the class. So that's why being aligned is extremely important. और ये बहुत सारे Your will was so much different from the rest of your class. I like that. Wonderfully put. Your will was so much different from the rest of your class, and that made the difference. Wonderful. So how do we make it happen, Sidra? कैसे ये अलाइन लिविंग मुमकिन बनाई जाए? जो माजी की वायरिंग है, जो सैबोटाज बिहेवियर है, जो मुनाफिकत है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए? उमर, इसके कुछ टेलटेल साइंस होते हैं. When you see yourself in a mind zone where you are constantly blaming, यानी आप अपने आप को देखो, 3 माइंडसेट्स होते हैं जिसकी मैं बात करती हूँ.
One is that of a victim. जब आप बार बार अपने आप को मजलूम समझने लगे, जब आपको लगे कि दुनिया जहान की ज्यादतियां, जुल्म, हर चीज आपके साथ हुआ है, you are unaligned. You are in your drama archetype. You're being a drama queen. And it's really important कि हम कहते हैं ना, यार मैं इससे प्यार करता हूँ, या ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, चलो ये वेंट आउट कर रहा है, मैं सुन लूँ. No. The first drama archetype mindset, which is telling you that you are unaligned, is when you're feeling like a victim. Secondly, when you feel like a martyr. When you are overwhelmed, यानी आपको लगता है मिसाल के तौर पे कि जी मेरी टीम में मैं इतना ब्रिलियंट हूँ कि ये लोग मेरे साथ अलाइंड ही नहीं है, मुझे सारा काम मुझे करना पड़ता है. हाउस होल्ड्स में ये कैरेक्टर यूजुअली अम्मियों का होता है कि पूरा दिन माँ ही लगी रहे. ऑफिस में भी एक बंदा टीम मेंबर ऐसा होता है जो ग्रिप कर रहा होता है, सारा काम मैं करता हूँ. उनको मोहब्बत भी होती है शहादत से वैसे. एग्जैक्टली. हमें मोहब्बत है अपने आप को, हम ओवरवेल्म फील करते हैं, पहले हम मोहब्बत से देते हैं, फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता कड़वाहट बढ़ती जाती है तो हम रिजेंटफुल हो जाते हैं. और उसके बाद आता है हमारा तीसरा माइंडसेट, व्हिच इज यू एज अ प्रोसिक्यूटर. फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर टर्म, दिस इज व्हेन यू आर बीइंग एब्सोल्युटली बिटर and nasty. You are a horrible person to be around. And आपका दिल चाहता है कि आप अगले बंदे को प्रोसिक्यूट करते रहें, आप उसको बताते रहें, आप गिल्ट ट्रिप्स पे उसको भेजें, आप बार बार उसको बताएं कि वो कहाँ कहाँ गलत है, आपने तौलिया गलत जगह पे रखा है, तुमने नलका बंद नहीं किया था, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि गाड़ी में हमेशा पेट्रोल डलवा के लाया करो. All these are signs of a prosecutor. When you are doing all these three, you are unaligned. The trick is to catch yourself. The trick is to understand that you've done enough of this drama, enough of these three mindsets. Now it's time to come into alignment. And for that, you first and foremost have to go back and realize, when did you formulate these beliefs? What did you see? Some people say workshops help them, and these necessarily don't have to be negative experiences. लोगों के subconscious में जाके जब बात निकाली जाती है तो वो बहुत कोई छोटी सी बात होती है. यार मुझे ये चॉकलेट चाहिए थी, मेरे भाई को दे दी, उस वक्त मैं 2 साल का था, मैंने बस इमेज बना लिया कि मेरे साथ तो हमेशा ज्यादती होती है, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते. And therefore you keep reliving that pattern. So the idea is to recondition that over and over again. And there are several things that can help you do it. Wow, quite a roller coaster there, Sidra. Yes. Quite a roller coaster. Yes. Whenever this is my favorite subject, so you can see I feel very enthusiastic talking about it. Yes, you do, and so much of it you pick from, you put it in the context so beautifully, because एक तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब वो डलता है तो वो ज्यादा आसानी से समझ आता है. वंडरफुल एक्सप्लेनेशन देयर. आपके जो सवाल आते हैं आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं. शोएब इज आस्किंग how to break the code and make a transition from unaligned to aligned living and how to stay on track. पहले का तो जवाब चल ही रहा है, but how to stay on track would be a good question, Sidra, because some people sort of recognize, शुरू किया, एक हफ्ता सही भी कर लिया, आपने भी शुरू में बात की. So how do you make sure that you push power through this? First and foremost, Umair, you have to do it for the right reasons. अगर आप गेम खेल रहे हैं, अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि यार मैं एक हफ्ते में चेंज करूंगा, and what you desire is other people to treat you differently, या अचानक से आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलने लग जाए, या आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मुझे अपनी पसंद का रोमांटिक पार्टनर मिल जाए, मुझे फेम मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए. These are still things outside. Other people have free will. It is not about influencing other people. You got to do it for your own thing. You have to believe in your thoughts. और मैं आपको बताऊं, a lot of times what we are trying to fine tune is again our conscious thinking. हम अपने logical mind को बताने की कोशिश करते हैं. You have experienced so many of these participants and trainees coming to you. जब वो आपकी टॉक सुन के जाते हैं, एक हफ्ते तक बड़ा जोश रहता है. किसी ने अगर किसी प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया है तो आप देखें 14 के 14 दिन वो चीता टाइम पे आएगा, काम भी करेगा, सब कुछ. But we see that the focus starts to dwindle, which is the question. So how you can power through is by sinking in your heart and staying connected to your feelings. मैं आपको बताऊं, unaligned living का सबसे बड़ा जो aftermath है, जो सबसे इसकी खतरनाक और तकलीफ दे बात है, you become very, very disconnected with your feelings and you start living only in your brains. And your mind becomes your biggest prison.
जो आपका देखने का तरीका है, जैसे मिसाल के तौर पे थिंग्स विल नेवर गो बैक टू नॉर्मल, कोविड-19 एक बला है, हमारी जिंदगियां खत्म हो गई, इकोनॉमी तबाह हो गई, अब तो बस दज्जाल के आने की तैयारी कर लें आप लोग. सो ऑल ऑफ दिस इज योर माइंड प्रिजन. व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं. अल्लाह ताला ने आपको ये सारी फैकल्टी दी है. He takes about 9 months. Nature takes 9 months to create you as the ashraful makhluk that he's created. And do you think couldn't we be octopuses या amoeba अगर हमने सारी जो हमारी चीजें वो हमने दिमाग से ही करनी थी? क्या वजह है? अगर इसको दीनी तरीके से भी देखो, आप कुरान मजीद की भी बात करते हैं तो आप कहते हैं इसका एक कल्ब है. सूरह यासीन को उसका दिल करार दिया गया. तो आपका दिल, आपका थ्रोट, यानी जिसके जरिए मैं और आप बात करते हैं, हम अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, दिस इज आवर थ्रोट. देन यू हैव योर हार्ट, यू हैव योर अदर फैकल्टीज. व्हाई इज इट दैट वी आर सो कन्विंस्ड टू लीड एंड लिमिट आवर लाइव्स टू ओनली आवर थॉट? मगर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे ख्याल आया, मेरा आइडिया. भाई इसके अलावा भी कायनात में आपको एनर्जी सेंटर्स और अपने लिए कोलैबोरेटिव कंपोनेंट्स को लाने के लिए चीजें बनाई हैं. The law of attraction is not that you can think and something will come to you. You have to feel it. And most often when you're getting into your aligned self, you will not see results immediately. It's like वो जो कहते हैं ना, बीज आपने जमीन में बो दिया, अब आप रोज उसके सामने बैठ जाएं, यार आज पौधा नहीं निकला, ये पौधा कब निकलेगा, कब पेड़ बनेगा, कब इसमें फूल लगेंगे, फिर कब इसमें, but the process has started. So likewise, एक और मेरी बड़ी फेवरेट मिसाल है जब हम क्वांटम लीप की बात करते हैं. उमैर, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन यू से क्वांटम लीप? क्या आता है तुम्हारे जहन में? In the historical context, but something that is like you've powered through a lot of years of change, something is just too massive. That is the fallacy. You know why? Because if you look at physics, quantum is defined to be something so minute, like a negligible needle move. और हमारे जहन में आता है ओ कोई सदियों की किसी ने छलांग मार के कोई दूसरी तरफ चला गया है, and you've traveled light years. No, it is the smallest of actions which will bring about the alignment. जैसे वो कहते हैं ना, वो जो पुराने जमाने का बैलेंस एंड स्केल होता था, एक हमने सारों ने वो फिजिक्स का जो 10th का पेपर होता है उसमें किया हुआ, वो बैलेंस के सामने बैठ के एक छोटा छोटा सिल्वर आप डाल के यू ट्राई टू बैलेंस इट. दैट्स व्हाट अलाइनमेंट इज लाइक. यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ लाइक दैट. और जब आपको इर्द गिर्द 3D में, दुनिया में आपको उसका असर नहीं दिख रहा होता ना, आप बड़े गए आज ना, मैं आई एम गोइंग टू बी एन अलाइंड पर्सन टुडे, और आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा. उसी दिन आपको अम्मी से भी डांट पड़ेगी, आपको बॉस से भी डांट पड़ेगी, आपकी गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हो जाएगी. सो यू लाइक ओ माय गॉड, यानी the nature seems to be against me. मैं जो करना चाहता हूँ वो है ही नहीं. You have to keep falling into your heart, in your feelings, in your heart space, and say, "अच्छा, I'm not seeing the result. Nobody is going to govern me. I will stay on my course." So that's most important. Wonderful. Umair Said is asking, isn't being a prosecutor a natural state when one is married? Umair is a dear friend, and only Umair can say this, because Umair, I don't know, Umair, if you know, Umair Said and I, we used to be in the same debating circuit. So hum badi, yeah, in college life and in school life, so we were in the same debating circuit, and I'm a big fan of the way he puts his ideas. He and I are very aligned in a lot of things. So Umair, प्रोसिक्यूटर भाभी बन सकती हैं, तुम्हें नहीं बनना चाहिए. और इसमें जो ना कहीं गलती होती है. आई एम नॉट गोना अब्सॉल्व यू. डोंट यूज दिस क्लिप एज टू शोइंग के देखा जी तुम प्रोसिक्यूटर हो, बट इट्स गुड टू कैच पीपल. अच्छा, ये जो तीनों रोल्स मैंने बताए हैं, बाय द वे वी ऑल टेक टर्न्स. इट्स वेरी नेचुरल टू गो इनटू इट. इट डजंट मीन के व्हेन यू आर बीइंग वन ऑफ दीज you are being a drama queen and you're doomed. The trick is to catch yourself. You will fall into it. You will fall into this trap and you will think, यार दुनिया में मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है, मैं तो विक्टिम हूँ, या मैंने सबके लिए सब कुछ किया, कोई मेरी कदर नहीं करता, या ये दुनिया ही बड़ी खराब जगह है. All three roles we will be living them, but the idea is to get out of them as quickly as possible. Herman is asking, when you're doing many things these days, how do you focus and be in the moment, working on one thing at a time? Herman, my favorite word these days
is a combination of two words. It's called, हमें एक बहुत बड़ी जो गलती लोग बताते हैं वो है multitasking. I'm not a fan of multitasking. I may seem to be doing a lot of things. That's because I'm a very energetic person. I'm like this ball of energy. मैं एक काम करती हूँ मैं बोर हो जाती हूँ. But the work that I do, my favorite term is I do it monomaniacally. Mono is singular, one thing, and maniacally is the maniac that I am. So monomaniacally is कि अपने आप को 1 महीना दिया, 3 महीने दिया, मुझे सिर्फ यही काम करना. That's my pet project. That time, it's my project of passion. मैं सिर्फ वही काम कर रही होती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, तो मैं दिन रात उसी के बारे में सोच रही होती हूँ. So that's how I focus. What was it? Monomaniacally. Monomaniacally. Maniac is from Maniacally. maniac, and mono is singular. One. Monomaniacally. Wonderful. Wonderful. So yeah, you could be doing many things. You have a lot of energy, but एक वक्त में एक काम, and that's when you ensure quality. Shahan पूछ रहे हैं, law of attraction आप कैसे समझाना चाहेंगे? Law of attraction is, again, law of attraction is something that got a lot of attention, Umair. But honestly speaking, law of attraction is basically law of alignment. And why I say that is law of attraction को लोग समझते हैं कि something that you desire, you want it so much that the universe is going to make ways and find you miraculous ways to achieve it. The reality is universe will give you what you deserve. Of the, आप ऐसा नहीं हो सकता आप बड़े नेगेटिव इंसान हैं, आप सबके साथ सबके लिए बुरा सोच रहे हैं और आपने जो बुरा सोचा है वो होने लगेगा. It will only happen. What comes to you is what you are aligned with, what you are vibrating with. आज मैं आपको, आपकी ख्वाहिश है कि आपको $1 million मिल जाएं. अगर आप अलाइन नहीं हैं, वो $1 million आपके पास आ भी जाएंगे, it will fall through your hands. And I have a scientific explanation, like this is a reality. I'll give you an example. एक रिसर्च की गई थी यूके में कि जितनी लॉटरीज लोगों ने जीती हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा जैकपॉट वाला इनाम होता है, उसके जीतने वाले 90% वो लोग जो गरीब बैकग्राउंड से आए थे, they all ended up becoming bankrupt again. They all ended up losing all the money that they had won. कभी उन्हें पहले नहीं मिले थे. State of mind ही वो था. Like my dear friend Sakina would say, आप अंदर से गरीब थे. बहुत सारे पैसे भी मिल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा. और आपने अजीबोगरीब चीजों पे पैसे खर्च किए because you were so aligned with being that way. आपने बड़ा सोचा नहीं, आपने अपने आप को तैयार नहीं किया. So this is how I define law of attraction. Even things when they will come to you, if you're not a match to them, you will slip it. जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, अच्छी relationship नहीं मिली, अच्छी नौकरी नहीं मिली. Maybe you were not ready. What you were getting is whatever is coming in your experience, you have attracted it. So if you become aligned with your thoughts. जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पैसा चाहिए भी और पैसा बुरा भी है. पैसा हर शख्स जिसके पास पैसा है उसने 2 नंबर से पैसा कमाया, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ. Two conflicting thoughts. You will never be able to go forward. वंडरफुल. अलाइनमेंट तो इसमें बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है. अगर आप सोच कुछ और रहे हैं, मांग कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं. Wonderful. You have touched upon this. What stops people? You've said their own behavior, but if you'd like to add anything, but more importantly, what are enablers? Sorry, it says what are good enablers of this aligned living? कि मैं अगर अपने अंदर aligned living लाना चाहता हूँ, तो इर्द गिर्द क्या कर दूँ तो मैं ज्यादा आसानी से उसके करीब पहुंच जाऊँ? What stops us and what enables us? सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, जब अलाइनमेंट की टॉक्स शुरू होती हैं या यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस, I feel people think that being a positive person means not having any negative feelings or any negative thoughts. Anger, pain, गुस्सा, दर्द, these are all indicators. They're like symptoms. अगर ये ना होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप unaligned कब. You know what I mean? If you're always happy and nothing is causing you pain, तो आपकी तो जिंदगी बिल्कुल सेट जा रही है. It is only through pain and anger and all these negative emotions, guilt, आपको पता चलता है कि आप अपनी राह से भटक गए. So first and foremost, when you're trying to enable yourself, don't be scared of your anger. Don't be scared. और एक हम चार्ट बनाते हैं aligned living का, in which you say कि low vibrational feelings क्या होती हैं and slowly how you climb up. इसकी ऐसे मिसाल दूंगी, एक बंदा बहुत ज़्यादा depressed है, depressed to the point of feeling suicidal.
So anger is probably better. Why? Because इस तरह स्टैक्ड है ना, मैं नीचे यहाँ पे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सुसाइडल थॉट्स हैं, ऊपर आप इसको क्लाइम करके एक स्टेप ऊपर आ गए, वे यू फीलिंग एंग्री, वे यू फीलिंग एम्पावर्ड कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ. कंप्लीट सरेंडर, गिव अप करने वाला डिफीटेड एटीट्यूड इज सुसाइड. लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है, उसके वाले को ये तो लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, कुछ तो कर सकता है ना, वो दुनिया को आग लगा देगा, आपको बता देगा, you know. So you are climbing up, and from that point you start to sort of take yourself up. So don't be scared of your negative emotions. If you're angry for a reason, but learn to process it. Learn to process it in a way that it becomes your enabler rather than it is something that paralyzes you. Asid is asking, is NLP needed to align? NLP is also roots. There's a lot of work that has been done with NLP, and it has its own benefits. Of course, जब हम subconscious rewiring की बात करते हैं, so जैसे मैंने आपको बताया ना उमैर, कि आप जिंदगी के पहले 7 साल theta waves में होते हैं. So you're literally in the state of hypnosis. Everything is just going straight into your memory bank, and it is getting, जैसे कंप्यूटर की ज़बान में आपका read only, यानी आपका RAM बन रहा है उस वक्त. So it is going in your brain and it is sticking over there. What NLP does and has been proven to be very successful is in reprogramming that. इसके 2 वक्त होते हैं. जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो your mind is, you know, slowly coming into consciousness. जब आप deep sleep में गए होते हैं, so you've gone into those same theta waves. So the moment you wake up and the moment you are about to go to sleep, because again your systems are shutting down, those are 2 times when NLP can help you reprogram yourself. And even if you don't believe in NLP, look at how beautiful our deen is. Fajr ki namaz or Isha ki namaz. Basically, the namaz is affirmations. Basically, the namaz is letting go and giving surrender and asking God for the sahi rasta, the sirat mustaqim. Alignment हो जाएगा. समझ के पढ़ रहे हैं तो वो भी अलाइनमेंट है, कि आप अपनी अलाइनमेंट कर रहे हैं कि अच्छा सुबह भी उठ के फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव डन. तभी आप, you know, if you're not a Muslim, if you're not somebody who says their prayer regularly, just wake up and say your affirmations. रात को सोने से पहले भी, तभी कहते हैं अच्छी चीजें सोचो, और सुबह उठते भी अपने आप को उसी होप वाले, put your best foot forward. Good. Khwaja wants to know if you can have this chart. I can send it to you. I can send it to you how feelings are low vibrational and how you can climb up to be enlightened. Emotional quotient, intelligence quotient, and adversity quotient are elements of alignment. अच्छा, यहाँ तक आते आते मैं तो लूज कर गया हूँ हसनैन पे, लेकिन सिद्रा जरूर जवाब देंगे. Composite of all these is alignment. Is it so? You're absolutely right, but this is a very scientific approach to it, Hassan. I love the fact that you're talking about intelligence, emotions, and adversity. Adversity is basically crisis management. These are very, जैसे हम management में कहते हैं ना, management by objective, management by goals, management by crisis. So you're similarly on that. These terms that you're talking about are again very goal oriented. इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है. फायदा ये है कि आप you stay the course, आपको पता है कि this is what I want to achieve, but then you take away the joy of exploration. आप एक tunnel vision के साथ चल रहे हो, आपको पता है मुझे point A से point B पे पहुंचना है, and for that EQ, IQ, adversity can work. Usually when life gives you a googly and you had no idea, just like COVID-19, तो वहां पे फिर जाके आप फंस जाते हैं. So have a little bit of creativity and design thinking and the element of wonder generally to the world as well. Thank you, Umair. You meet so many. What scares you about the unaligned folks? Nothing. The unaligned folks, जैसे वो कौन सी वो थी? I think there are several wise thinkers who have reiterated the same thing. पता है उमैर, पहली चीज क्या होती है when you start exploring this unaligned thing ना, तो it's almost like becoming a doctor. जितने बच्चे हमारे यहाँ MBBS कर रहे होते हैं, वो किताबों में देखते हैं, उनको psychosomatic symptoms नजर आने लगते हैं. उनको लगता है, वो कन्विंस्ड होते हैं कि यार मुझे ABCD 15-20 बीमारियां हैं, क्योंकि अब जाके पता चला ये सिम्टम्स क्या होते हैं. तो इसी तरह when you start reading upon this, you start labeling people. जैसे तुमने भी अगर कोई पर्सनालिटी चार्ट पढ़ा हो और 4 किस्म की पर्सनालिटी है, the moment you look at me and you're like, Sidra जो है ना is very aggressive, ABC type A personality. हाँ, तो this is what we also do to people when we are trying to get into aligned thinking.
यार ये अनअलाइंड है। आज उमैर को गुस्सा आया हुआ है, ही इज बीइंग अ प्रोसिक्यूटर, ये बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट आउट है। इससे ना डक योर वे थ्रू और आज बात ही मत करो। बट अगेन, what is every experience trying to teach you? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये इतना छोटा सा टनल है उमैर, जो भी अलाइंड थिंकिंग की तरफ, अलाइंड लिविंग की तरफ जाना चाहता है, प्लीज डोंट ट्राई टू सेव एवरीबॉडी। ये नहीं कि आज मैंने ये सोच लिया है, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा मियाँ, मेरे बच्चे सब आज से सब अलाइंड होंगे। नहीं, आप प्लीज दुनिया को छोड़ दें, आप सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे काम करें। इतना इतना बड़ा काम नहीं है। सो व्हेन यू फील दैट अदर पीपल आर अनअलाइंड, don't focus on them. You are only what other people think about you, how other people are conducting themselves. You have no say in that, and you should just stay away. That is what I recommend people. Somebody asked how to, Herman, so how important is it to surround yourself with the people who are themselves aligned? And how do you identify such people? I mean, I'll make it simpler. Um, if you want to know where you will be 5 years from now, look at the 5 people that you're spending the most time with. आपका sum total उन 5 लोगों से आगे कभी नहीं हो सकता. When you will know this, you will become ruthless about the way the time and the resources you spend on people. सिर्फ किसी शख्स को देखकर उसकी मोहब्बत में, उसको सही करने के चक्कर में, by ये तो circumstances हैं कि मैं इसके साथ हूँ. No. Look at a person. If you can't love them, respect them, and feel inspired by them, you should cut down your time with them, because your own destiny is going to be the sum of the 5 people you're spending the most time with. So make sure that they are people who inspire you, who know something better than you, who have qualities that you admire and you'd like to adopt them. Wonderful. Very, very important, the people you hang out with. मैंने किसी को पढ़ा तो उसने ये भी लिखा हुआ था कि आप उन 5 लोगों से ज्यादा हसीन भी नहीं होंगे, उन 5 से ज्यादा पैसे भी नहीं कमाएंगे, और 5 से ज्यादा दीनदार भी नहीं होंगे. So the company that you hang out with. Point of reference ही वो होते हैं, उन्हीं के जैसा होना होता है. Yeah, that's the point of reference. Well said there, Sidra. Thank you very much. Great answers. You tell so many good stories. Tell us a story on aligned living. You've given us all of this conceptually, and you've given some examples from around us where we are unaligned and aligned, but a story would really, really be helpful. So aligned living is work in progress. It's not like it will start with once upon a time and it will end with they lived happily ever after. एक चीज जो आपको याद रखनी है about aligned living is you're never going to get the work done. You're never going to get out of this alive. There will always be more things to learn. And especially if you've had any pain, any anger in your past, it is, one of the foremost writers in this domain these days is Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, after, being so aligned and, developing methods of alignment, he says, my pain body still comes out. इसका एक मैंने बड़ी खूबसूरत मिसाल देखी थी. One of the thinkers, I was recently at a Mind Valley conference and I met Vishen Likhiani. One of his teachers had this idea who he thought कि यार वो इतना enlightened है, इतना ज़्यादा, he was supposed to be speaking at an event. पता ये चला कि उस event से तकरीबन एक हफ्ता, बल्कि एक हफ्ता भी नहीं, 3 दिन पहले his father passed away. Alignment is all about being very aware and very mindful, right? So everybody thought that he'll probably not show up, he'll not be there at the talk. This guy shows up. And Vishen, being a friend, Vishen says, I went up to him and I said, yaar, I want to know how you're feeling. तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो? Are you out of alignment? Are you feeling very negative? Are you asking questions कि why me? ये मेरे साथ क्यों हुआ? दुख तकलीफ grief को तुम कैसे process कर रहे हो? And the answer he gave, Umair, was so beautiful. He said, I know that I'm positive. I know I'm blissful. I know that anything and everything is possible, and I'm so blessed. Gratitude is again very important in this. But he says, in my stratosphere of those feelings, I know that I have a visitor and a guest of pain, of anger. I know he's there, but I'll just let him be. So being so aware of your feelings and of your emotions, I was blown away by that answer. कि even knowing कि यार मेरी जिंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन आज एक मेहमान आया है जिसका नाम परेशानी है, जिसका नाम गम और तकलीफ है, ये चला जाएगा. You don't have to dwell on it. You don't have to give him visa and say कि आइए अब आप naturalize हो गए हैं और यहीं पे रहिए.
You have to let them So go. that, So don't serve your feelings, especially your negative feelings. They come in as indicators. Indulge in them. Find out what they are there to show you, and then just let them go. wow. Well, just a couple of hours ago, I was doing a session with Changezi. Abid Changezi hote the pehle. So Changu, he teaches yoga now. So he said that, the height of awareness, he used to say about Buddha that he would feel the atoms and the molecules in his being and be connected with that energy. And just like you said that, being able to see even a feeling as a visiting guest in your Yes. own mind Hmm. and then treating it accordingly. Wonderful. Zahid wants to know any books you would recommend on aligned life. Well, there is an upcoming book जिसकी excerpts आई हैं. Again, I was mentioning Vishen Likhani. He I think has a book about, I'm forgetting the name. It's yet to come out. It's about how to hack the Zen mindset, and he writes it as, the way we are. One of the best, by the way, meditations is what he does as a 6 phase meditation. Highly recommending it to all the people. लेकिन मेरी जो all time favorite किताब है, जो मुझे लगता है पाकिस्तानियों के निसाब में होनी चाहिए, is by Robert Fulghum, and it's a book that is called Everything I Needed to Know I Learned in Kindergarten. बड़ी पतली सी एक किताब है, और उसमें बेसिकली कहा जाता है कि जब आप किंडरगार्टन में होते हैं तब आपको बताते हैं तमीज़ से बैठें, किसी और की चीज़ को हाथ ना लगाएं, प्लीज़ बोलें, थैंक यू बोलें, कतार बनाएं, सफाई करें. If we just stick to that, everything is value add, everything else is frill additions. लिविंग के लिए यही चाहिए होता है, और हमें वही नहीं आता. हमें आज कोविड-19 में भी जो है ना, लाइन बना के स्टोर में जाना बुरा लग रहा है. So please, everybody read Yeah. Everything I Needed to Know I Learned in Kindergarten. Wonderful. Mary is saying a lot of us feel we're broken beyond saving. Is anyone ever so unaligned that they can't recover? No, I don't believe that. Umair, I feel कि again एक जैसे बीमारी होती है या तकलीफ जहाँ से शुरू होती है, पहले वो आपको कोई हल्का सा सिम्टम देती है, आप उसको इग्नोर करते हैं. वो उससे ज़्यादा ग्रेव सिम्टम आपको देती है, आपकी बॉडी उससे बैटल करती है, बुखार आता है, तकलीफ आती है. आप उस वक्त भी अपने आप पे अगर नज़रसानी ना करें, then things start becoming worse. When you get into aligned living, that's exactly going to be. आपके दिल में ना पहले एक हल्का सा ख्याल के तौर पे आता है, किसी का एक स्नब आपको बुरा लगता है. That is your hunch, that is your intuition telling कि यार ये this place is not for me. आप उसको इग्नोर करते हैं, आप कहते हैं शायद नयापन है, नहीं ये उमैर मेरे बारे में बुरा कैसे सोच सकता है, लेकिन आपको कोई बात ने हिट किया होता है. Aligned living is all about paying attention to those. लेकिन that gets me to a very important point. जो लोग कहते हैं ना मेरी sixth sense बड़ी तेज है, मेरी intuition बड़ी तेज है. Umair, how do you make a difference? How do you differentiate between what is sixth sense और क्या चीज आपका वहम है? यानी इंट्यूशन और वहम में आप फर्क कैसे करेंगे? बताओ. Oh. It's a difficult one. But I think Vehem is my own dark imaginings, creating things that are not real. But Yeah. intuition is powered by your experience. You don't know where it's coming from, but it is coming from that experience. जो आपने बचपन की वायरिंग की जैसे बात की, इस तरह बड़े होके भी कर करके having met a lot of people, experiences have given you a gut. And एक so it comes एग्जांपल from a देती हूँ ना, place. जैसे कोई कहीं जा रहा था, उसने कहा यार इस गाड़ी में ना मुझे बैठना नहीं चाहिए, और फिर बाद में पता चले कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, आगे जाके. And so you're like, see, my sixth sense was so strong, it was already warning me. Is that vehem or is that sixth sense? I don't know. See, I want to make it simpler for all the people who are watching it. जब आप कहते हैं ना आपकी sixth sense से मुराद होती है आपकी intuition. Intuition will always be inspiration based. It will always be that little fluttering in your heart where you think something is a great idea, something is so exciting. That is intuition. Everything else is fear based. अगर हम aligned living की बात करते हैं, हम black and white, right and wrong नहीं कहते, उमैर. हम बात करते हैं two big blocks. One is a love-based block, and the other is a fear-based block. खौफ, वसवसा, doubt एक डब्बे में है, and the opposite डब्बा of that is मोहब्बत, love, everything sweet, everything inspiring and exciting. So when you want to be more aligned, keep falling into things which
evoke that sense in you, that evoke that positivity in you. And it doesn't need to make sense to the world. You could be happy painting, you could be happy cooking. The world doesn't need to understand, but you have to be doing it from that place where you feel it's love based. It's from the heart. Beautiful, wonderfully explained. Thank you. You got us there, Vehem. Or can I just reinforce this for my own learning that if it's powering me up, if it's positive, and I feel that spiritual, then that's the mode that you're talking about. इसके अलावा जो है वो fear based जैसे ही है. नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, कोई नया प्रोजेक्ट तुम शुरू करने वाले हो, and if that's making you, it's making you exciting, it brings a skip to your step, then that's something, that's intuition. You intuitively know that that is what you want to do. अगर तुम्हें डर लग रहा है तो it is only your fear talking. उसको sixth sense का नाम कभी नहीं देना चाहिए. ठीक है. Does aligned living means not chasing wealth and materialism? Oh, I love this one. Zainab, I get this question a lot. लोगों को लगता है कि आप aligned living में अगर चले गए तो दुनियादारी, materialism सब चीजें पीछे छोड़ दें. That's not true. I think it's our energy and our orientation towards these things. देखिए सबसे पहले ये मेरा personal peeve है, and I'm sure Umair faces that as well. People want to come to lectures and seminars and workshops, ठीक है? And they want you to change their lives. मेरी जिंदगी पे मेरा नजरिया, मेरा perspective बदल दें. आप कहते हैं great, I have this one day workshop, it's going to cost you x many dollars. नहीं, that's too much. बहुत ज़्यादा पैसे हैं. आप हमें डिस्काउंट दे दें, या मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, आप मुझे हेल्प करें. आपके पास इतनी नॉलेज और ज्ञान है कि आपको तो ये फ्री देना चाहिए. When they say that there are no free lunches in the world, what they actually mean is my energy, my time, my knowledge, this is all things that I'm giving. There has to be conscious giving and conscious receiving. Otherwise, आप नेकी कर दरिया में डाल वाला सिनेरियो होता है जिसको अगले को भी उसकी वैल्यू कभी महसूस नहीं होती. So wealth is a brilliant thing, and it should help you define your own, the worth of your time and of your knowledge and what investments you've made on yourself. So never be shy about, मैं youngsters को भी कहती हूँ, never be shy about asking the salary that you think you deserve. Know your worth and add tax to that is my go-to advice. Wealth is not a bad thing. You've invested in yourself. You have become who you are by spending a lot of hours, by spending a lot of resources with a lot of devotion. So wealth is never bad, and in aligned thinking, in fact, there is abundance. There is abundance of everything. More of money and everything will come because it's about conscious giving. मैं आपको वही दूंगी जहां मुझे लगेगा कि वैल्यू. मिसाल के तौर पे आपके साथ आज मैं ये टॉक कर रही हूँ, there's no monetary gain in that, but it's an enriching, it's a fulfilling experience for me because this is a subject I really enjoy talking about. This is a subject I want more people to know about. So I'm getting something for giving something. वंडरफुल. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज करता है, और सिद्धा ने शुरू में बात की कि उनकी जिंदगी फिर खराब ही होती है, पैसे भी नहीं कमा पाते और फिर ज्यादा शौक रहते भी नहीं है. हाउ टू परस्यू योर पैशन व्हाइल लिविंग अलाइन्ड. रमशा, आपके सवाल में ही आपका जवाब है. Living aligned is all about chasing your passion and pursuing your passions. The more of your passions that you will pursue, the happier you're going to feel and the more aligned you are going to be. Wonderful. Huma wants to know about the childhood wiring. कि आपको पता चल गया लेकिन आप चेंज कैसे करें? And if there is any book recommendation. See, there's several books on this subject. Pick somebody you like. Listen to podcasts, motivational speakers. I personally love listening to Mel Robbins or iske ilawa, Robin Sharma. I mean, these people, Vishen Likhiani. There are lots and lots of programs on Mind Valley. जो कि आपके लिए immersive programs हो सकते हैं. So do give them a shot. Childhood wiring को change करने के लिए सबसे पहले, please, there is so much noise around us and we are such, हम इतने एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स के बजाय ह्यूमन डूइंग्स हैं. ह्यूमन बीइंग है जस्ट बी. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इट इज नॉट, you are not your project. You are meant to experience life. So go with the flow, but when you are trying to become more aligned, be curious. Have that sense of wonderment towards world. और childhood wiring को change करने का बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप recognize करें कि कोई thought, कोई belief आपके अंदर क्यों है. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि लव हर्ट्स,
या आप कहते हैं कि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये थॉट्स, ये चीजें कहाँ से आई? इट्स गुड टू sort of go back and see कि क्या मैंने अपनी अम्मी को ही कहते हुए सुना था, खाला को कहते हुए सुना था, नानी को कहते हुए सुना था. And if it is borrowed belief, then you have to filter it by asking, is it working for me? यानी ये बिलीफ रख के मुझे क्या फायदा हो रहा है? तो अगर नहीं है तो फिर आप उसको बदल सकते हैं. सो उसके लिए पहला स्टेप ये होगा, प्लीज ट्राई doing meditation for 10 minutes. And meditation doesn't need to be, oh, sit on a mountain and breathe. Just take 5 minutes where you stop. आपका इस दिमाग में एक हैमस्टर व्हील है, वही थॉट्स बार बार आ रही हैं, ट्रेडमिल पे आप भागे चले जा रहे हैं. सो गेट ऑफ दैट, एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज टू क्वाइट योर माइंड. 5 मिनट के लिए just focus on your breathing, meditate, and it's going to get you more aligned. Wonderful. Thank you for that. A couple more questions, Sidra. One is that the conscious and the subconscious are always at war. How do we make them work together? That's always seems to be a conflict between the two. Not really, Farhan. Conscious and subconscious are not at war. It is only that, when things that you are trying to do consciously are not working and you're not able to understand कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है. मिसाल के तौर पे तुम सिगरेट क्विट करना चाहते हो, स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो, नहीं हो रही. So what is that underlying belief at that time? It is really important to sort of unpack it. So they're not really at war. They're two layers of your own being. It is good to have an understanding of that. You don't need to repeat it. There are great things in your subconscious as well. वरना सोचो रोज सुबह जागने के बाद हमें दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ती, याद करना पड़ता है कि उतरते कैसे हैं, चलते कैसे हैं. ये सब चीजें सबकॉन्शियस में ही हैं, तभी तो कर रहे हैं ना. आज आप और मैं, we don't have to think twice about taking a step. Look at a 2-year-old जो भी चलना सीख रहा होता है, वो सीख रहा होता है कि एक पैर आगे रखना है. It's a whole physics thing for him. It's like, being in a Transformers movie. So subconscious is not your enemy. It's your friend as well. True that. Uzair, are you there? If you are, please go on with your question. चले गए Uzair. Wonderful. Thank you for answering that. Yes, please वापस देखें. बहुत सारी बातें सिद्रा ने mention की हैं और बहुत खूबसूरत. Lots of love for you, Sidra, from people who've seen you around. एक साहब तो स्टन हो गए, कह रहे हैं सिद्रा को तो मैंने हमेशा फॉर्मल बड़े बड़े इवेंट्स करते हुए देखा है और ऐसे बैठ के इनफॉर्मली बता रही हैं इतने मजे से. मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सिद्रा बहुत अरसे से और बहुत साइड पे ये करती रही हैं और बहुत लोगों को हेल्प किया है उनके करियर्स फर्दर करने में, उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज डेवलप करने में. बट अच्छी बात है. A lot, तुम्हें पता है, I get this. I mean, people assume that I do state events and I've been a current affairs anchor. मेरी बड़ी एक serious personality, but Umair has also had the misfortune or the fortune of traveling with me. So he knows my other side as well, which can be all about wisecracks and jokes and just making fun of fellow travelers. Let's there was one question, I don't know, but it was just for people, so many people have opened up their camera, they're sitting on screen these days. I know it's a little off, but you have done this and you've done this for a long time. What's your advice to people who are venturing into this? 120 years old, that's what you're trying to imply, huh? No, not at all, but experiences कुछ लोगों के बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे experiences बहुत कम वक्त में होते हैं. Yes, you've been doing it for a long time, Sidra. We've grown up watching you. Please quit. Is that what you're trying to say? No. और उसमें भी मैंने कहा था when we were growing up, okay? अच्छा चले. So would you like to advise anything for people who are doing this right now, becoming hosts, moderators on these digital shows, or want to pursue this as a career? Umair, I think first and foremost, develop a niche. Know what you're good at, and you have to be your own personality. अच्छा, इसको बड़ा लोग, they oversimplify it when they say कि be yourself. That doesn't mean that you do not follow the decorum. यानी मेरी आवाज, if I'm speaking in gibberish, if my voice projection is not that strong, if I'm not knowledgeable about the subject that I'm speaking, then I'm being dishonest to my work. Being yourself does not mean that you don't put in the work. You don't prepare yourself. And I say, even जिसको हम extemporaneous speaking कहते हैं, you prepare for it for life. Who I'm forgetting, was it Leonardo da Vinci or one of these
greats of all times, who was sitting, and a woman walks up and she's like, "Can you please draw something on my handkerchief?" And he does that. And before he hands it over, she's like happy, ecstatic over it. I was like, now this is going to cost you this big amount of money. And she turns around and she's like, "But it only took you 2 minutes to do that." He's like, "No, it's taken me all the while that I have practiced. I mean, to be able to do it in 2 minutes, there's a lot Yeah. of experience and hard work that has gone behind it." So again, it's about self-worth as well, and it's about investing in yourself, and of course the works of it. मैं तुम्हें बताऊं, मैं right before, and I want to give them mileage for this. I was clueless about the kind of, I was upgrading my workstation. मैं अपना show घर से करना चाह रही थी. A lot of people still don't know that I'm a single person army doing this. People still assume यार कोई आके light camera में तो आपको help कर रहा होगा. No. And I was reaching out to people. So I found great mentors, great, experts who had just needed to reach out. And this is again an example of aligned living. एक ड्रामा आर्किटाइप है कि मैं अपने आप को मार्टर समझने लगूं, मैं ओवरवेल्म्ड हो जाऊं कि यार इतने सारे काम होते हैं, मैं ये भी करूं वो भी करूं. But challenge that by reaching out and looking for resources. So Hashmani Photos, I reached out to them. They were brilliant at pointing me out कि ये करें. Another friend of mine, Salim Kareem, who runs TechX, a brilliant group on Facebook, आपकी tech related कोई भी query हो. So I wanted to know कि मुझे कौन सा कैमरा यूज करना है, मुझे रिंग लाइट कहाँ से मिलेगी, मुझे माइक कहाँ से मिलेगा. So just be resourceful. Reach out, people will help you. So there are experts all over. और पढ़ाई करें. आज सुबह की मैं आपको बताऊं, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला. मेरे पीसीआर में से सारी टेक्निकल टीम कहने लगी, "आपने फिर कैमरा अपग्रेड कर लिया, आपकी लाइट तो बड़ी जबरदस्त है." मैंने कहा, मैं सुबह से बैठ के 5 ब्लॉग्स पढ़े, पढ़ाई की है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, पीछे कितना, यानी सेट डिजाइनर, प्रोड्यूसर, लाइट्समैन, कैमरामैन सब सिद्रा इकबाल हैं इस वक्त. तो आप उसमें मेहनत करें थोड़ी सी, you'll be able to find all the things. Wonderful. Thank you so much, Sidra, for joining us and for really this enriching and very energetic dialogue. You Thank you. yourself are, आप खुद दिखा रही हैं वो बातें जो आप कर रही हैं. Alignment नजर आ रही है. Alignment पे हमने आपको पूरे नंबर दिए. Mashallah, you're glowing. You look so fresh, positive, and you're constantly churning out, creating great things. Somebody said this, and I wouldn't say that only, but I would say that she is a rare educated host, very enlightened host, and makes a lot happen just by the gift that she has. And she has worked, rightly put, that she has worked very hard on this. Many forums, debating events, lots of media khwariyan. The events that you see her doing are not easy to pull off. Thank you so much, Sidra. What a privilege. And so many have said so much about you. Please go through the comments when you have the time. I will. And Umair, I just want to take this minute and thank you as well. If it wasn't for Umair, this would not have happened. I think we've been trying to do it since Ramzan, but with fasting and with the Ramzan show, it just wasn't possible. So I'm so honored and so humbled that you made sure that I was a part of it. In fact, the last message I got from Umair was like, "I don't want to wind up this season without having you in this. So please get aligned with me." Get aligned. So, Yeah. so thank you so much, Umair. You're doing a brilliant Thank thing you. because a lot of people learn from it, and it's all about getting people inspired and having that impact. So kudos to you for doing a great job at that. Thank you. Stay well, stay beautiful. Keep doing the great work that you're doing, Sidra. Khuda Thank you. Hafiz. Pleasure. Khuda Hafiz. Thank you. That was Sidra Iqbal. You've seen Sidra Iqbal in many roles. जिन्होंने सिद्रा को पहली मर्तबा इस रोल में देखा है. सिद्रा बहुत मजेदार प्रोग्राम्स फैसिलिटेट करती है, बहुत ही लिमिटेड करती है, लेकिन कभी कभी करती हैं और अच्छा करती हैं. एंड शी इज बीन डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप सबका जुड़ने का बहुत शुक्रिया, कमेंट देने का. जरूर शेयर करें वीडियो उन लोगों के साथ जो कि अलाइन नहीं है. अलाइनमेंट की चीजें जरूरत है, जो कि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी टीना सानी के साथ और बात करेंगे क्लासिकल म्यूजिक पे. So see you shortly.